So this is the next topic that we will discuss today. So four topic amar achi. So the next topic that we'll discuss today is our what? Common human diseases. So इथरे तमे देखुछ लेफ्ट साइड रे गोटे पर्सन गोटे पिलाटे अछि. Okay. So सेते तमे देखुछ गोटे पेशेंट. This was one of the most dangerous diseases reported in the history. तो आमर दिस इज नोन एज स्मॉल पॉक्स. तो बहुत लोकंकर कंट्रीब्यूशन रे बहुत लोकंकर सहाय्य रे सेइथरु आमे निजात पाइलु एंड दैट इज कॉल्ड स्मॉल पॉक्स. माने मारात्मक देखछु कि नै ता से पिलार देहरे आ किछि जागा नै जोठी की घा हे. फाइन. द रिबन रेड रिबन इज एड्स अवेयरनेस रिबन. तो आमे देखुछे एंड राइट साइड रे जो मु तो चित्र देखुछि दैट इज ऑफ एचआईवी वायरस. Clear? तो आमे डिस्कस करिबा डिजीज. तो डिजीज माने कौन? ठीक अछि. तो तापरे ता विषय डिस्कस. द डिजीज इज एन एब्नॉर्मल कंडीशन दैट negatively affects the structure or function of all or part of an organism, and this is not immediately due to any external injury. माने खाली इंजरी हेले डिजीज हबो बोली किछि माने नै. तो यदि को ना को पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन करूनी ठीक रे से ताको हमें डिजीज कहि परिबा. आजिकाली तो हमें अलग अलग डेफिनेशंस गलुनो, बट वी विल अल्टीमेटली फॉलो द डेफिनेशन सेट अप बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो डिजीज नाना प्रकार कारण पे हेई पारे. इफ इट इज लाइफ, if disease is caused by living organisms, ताले से ही बड़ा organisms को हमें कौन कहिबा? तो हमें तांको कहिबा pathogens. तो pathos माने कौन? pathos माने होची pain and genesis माने होची generative. तो जो कीटाणु या जो organism आउडा organism रे जाई की pain दिए तो ताको कौन को आजीबो? pathogen. ठीक अछि. So that is called pathogen. So we have different types of diseases. So सेइथरे सबडू first is called acquired disease. And first होची innate disease माने जोड़ा के हमें we are born with. हैला मां पेट्रो जो रोग नहीं के हमें आसीचे they are called inherited diseases या तमर congenital diseases. किंतु जो डिजीज हमें एई दुनिया रे आसिला परे पाइले, so that is called what? Acquired disease. हैला. तो आ एई जो acquired disease समस्त को होएनी, जे एक्सपोज थाए ताकू हो. हैला. तो सही तरह हमें डिजीज अलग अलग टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करि परिबा. तो नंबर 1 होची एक्यूट डिजीज. तो एक्यूट डिजीज माने कोन? ओके. It is one of the short term nature, है short term nature disease. Okay, and बहुत severely affect करिबो. Chronic disease माने कोन? Chronic disease माने जोड़ा दीर्घ काल हेला चली आसी. Fine, it persists for a long time. तापर hereditary disease माने कोन? Hereditary disease माने होची जोटा हमें inherit करिचे from parents. हैला. So they are called hereditary diseases या genetic disorders. ठीक अछि. तापर होची idiopathic disease. Idiopathic disease माने कोन? ता माने जार सोर्स हमें जानी. ओके. अननोन सोर्स माने नॉट श्योर सोर्स. डिजीज ता किमिति हला वी आर नॉट सो श्योर. तो ताको हमें कहबा idiopathic disease. हैला. incurable disease माने जोड़ा ठीक हेई पारिबो नाही. ओके. primary disease, primary disease is a disease that is due to a root cause of illness,
as opposed to secondary disease which are complications that is caused by primary माने मेन डिजीज जोटा ताकू प्राइमरी डिजीज कुआ जीवो ता रिलेटेड जो रोग गुडा हेछि ताकू हमें सेकेंडरी डिजीजेस कहि हला टर्मिनल डिजीज माने जो डिजीज पई गोटे लोक मरि जी दे आर कॉल्ड टर्मिनल डिजीज तापरे सिंड्रोमिक डिजीज माने कौन जो डिजीज मोर देन वन सिम्पटम देखौथिबा माने बहुत गुडे सिम्पटम्स देखौथिबा डिजीज को हमें सिंड्रोमिक डिजीज को ठीक अछि तो सेही भले हमें पैथोजेन मिलिला कोठू ता आधार में डिजीज को क्लासिफाई करि परिबा लाइक एयरबोर्न डिजीज तो एयरबोर्न डिजीज माने कौन से पैथोजेन या तार स्पोर्स एटसेट्रा एयर रे भी स्प्रेड होउछ ठीक अछि so that is called airborne disease ओके तापरे फूड बोर्न डिजीज माने जोटा खाद्य द्वारा स्प्रेड हुए ओके भल खाद्य खराब खाद्य इन्फेक्टेड खाद्य ओके एइथरु जो डिजीज स्प्रेड हुए ताकू कुआ जाय फूड बोर्न डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज माने कौन जोटा माने ट्रांसमिट हेई परिबो या कम्युनिकेट हेई परिबो ताकू इन्फेक्शियस डिजीज कहते सपोज गोटे पर्सन को इन्फेक्शियस डिजीज हेइनी तमे ता संगे रहिले किछि असुविधा नै किंतु जदि गोटे लोक को इन्फेक्शियस डिजीज हेई जाइछि ताहले ता संगे रहिले कोन हबो रोग आउरी स्प्रेड अंडरस्टूड तापरे लाइफस्टाइल डिजीज माने आजिकली कोन आमनकर लाइफस्टाइल बहुत कॉमन मॉडर्न डिजीजेस बा बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बा काहे कि जेहेतु आमनकर लाइफस्टाइल रे चेंज अछि आगे काले कोन होतला लोककर पैसा नथला से माने कम खाउतंती तापर गाड़ी घोड़ा नथिला चाली बुली की जाउतंती लिफ्ट नथिला से पे सीढ़ी चढ़ुतंती तो आजिकली कोन हे गेला जेते मॉडर्नाइज जुग हे गेला आजिकली लोक पैसा बढ़ी गेला से पे भलो भलो जिंस खाइला किंतु एक्सरसाइज कमी गला सीढ़ी चढ़िया कमी गला चाल बुल कमी गला तो से पे वी आर हैविंग सम डिजीजेस दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज माने जोटा गोटे ऑर्गेनिज्म रु आउ गोटे ऑर्गेनिज्म को देई हबो नाही ओके तो जो डिजीज ता तमे काहा को देई परिबनी दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जोटा तम द्वारा स्प्रेड हेई परिबो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज तो कम्युनिकेबल डिजीज रे हमर जो अलग अलग पॉजिटिव एजेंट पाई पार हे गेला लाइक फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल डिजीज तो बैक्टीरियल डिजीज के कॉज करछि बाय बैक्टीरिया तो इधर अलग अलग डिजीज हे गेला हमर डिप्थेरिया टिटेनस टाइफॉइड ए सब रोग गुडा लिखि दियो बहुत पिलां को इवन ए जो को डिजीज जदि कहबा 10 टा ना को कहि परना गोटे दिना कहि दउछथि जोडा एनसीआर लिखछि किंतु बाकी गुडा कहि परना तो से पे इधर बहुत लिस्ट ऑफ डिजीजेस में देछि से सब लिखि दियो हला तो लिखि दियो बैक्टीरिया डिजीज डिप्थेरिया टिटेनस टाइफॉइड टीबी ट्यूबरकुलोसिस को टीबी कहा जाए कॉलेरा गोनोरिया मु पिंक रे अलगा काई करछि बिकॉज़ इट इज आल्सो ए सेक्स लिंक डिजीज से पे तको अलगा रे भी मु करछि हैला तापर लेप्रेसी प्लेग परटूसिस या हुपिंग कफ हुआ जाए सिफिलिस एटा गोटे सेक्स लिंक डिसऑर्डर हैला मेनिंजाइटिस कंजक्टिवाइटिस encephalitis
क्लैमिडिया एक्चुअली क्लैमिडिया अछि एटा रहि जाई छी क्लैमिडिया क्लैमिडिया इज आल्सो ए सेक्स लिंक्ड डिजीज पेप्टिक अल्सर बोला पेप्टिक अल्सर बहुत कारण रही पारे वन ऑफ देम इज आल्सो बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया है तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इट कॉजेस योर व्हाट पेप्टिक अल्सर तापरे नेक्स्ट पड़े सब वायरल डिजीज तो वायरल डिजीज पड़े आसीबो मीजल्स मम्प्स पोलियो स्मॉल पॉक्स हेगला चिकन पॉक्स रेबीज इन्फ्लुएंजा ओके इन्फ्लुएंजा हमर कॉमन हेगला वायरल डिजीज तापरे हमर कोविड-19 मर्स कोवी बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू ओके हेपेटाइटिस ए बी सी एड्स genital herpes oral herpes and and आजकल आजकल genital warts human papilloma virus and chikungunya लिखि दियो सब जगह डिजीज लिखि दियो खाता रे तापरे आसीगला हमर प्रोटोजोआन डिजीज तो प्रोटोजोआन डिजीज रे कोन आसीबो तमर मलेरिया एमीबियासिस एमीबिक डिसेंट्री कहती काला आजार तापरे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस गायार्डियासिस ठीक अच्छे तापर हेलमेट डिसऑर्डर हेलमेट माने राउंड वर्म्स उसे तो लिखो टीनियासिस हो जी प्लेटफॉर्म एस्कैरियासिस फाइलेरियासिस ट्रिचिनोसिस एटा सब हो जी राउंड वर्म तापर पड़े आसा फंगल डिजीज तो फंगल डिजीज आसकेला रिंग वर्म एथलीट्स फुट एला तम डैंड्रफ एति बहुत गुडे डिजीज अछि फंगस कॉज करूछ देख देला चलो तो तापर हमें पढ़ेबा आगु on the mode of transmission contagious disease contagious माने कौन these are communicable diseases that can be spread from one person to another person by contact okay actual contact तो actual contact हेले ही contagious disease हेई पारि ठीक अछि non contagious disease माने कौन they can be spread from infected to healthy with microorganisms that inject inside the human body है तो सेटा food air water or by microbes ठीक अछि जो डिजीज टा माइक्रोबियल कारण पे होउची या खाद्य पे होउची स्पाद्य पे होउची सो दे आर ऑल कॉल्ड कंटेजियस सपोज गोटे लोकटे खाइला ता संगे तमे खाई देलो या तार अइठा खाई देलो तो रोग हो गला ओके या ता पाखे बसिच तो हे गला तो दिस आर ऑल नॉन कंटेजियस डिजीज ठीक अछि तो दे डोंट नीड एक्चुअल टच ठीक अछि कंटेजियस से कोन एक्चुअल टच दरकार नॉन कंटेजियस से एक्चुअल टच नॉट इक्वल ओके तो इथरे कंजेनाइटल डिजीज तो दे आर अफेक्टेड फ्रॉम बर्थ हैला तो एबे आ विषय रे हमें डिस्कस करिबा
So now I am giving you a 15 minutes break. ଆମର 9ଟା ବାଜିଗଲାଣି ହେଲା. So now you can take a break. All of us will rejoin at how much? At 9:15. ହେଲା, and we will continue the lecture. ଏବେ ତମମାନେ ତମର ଯାଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ या फ्रेश ହେଇ ଆସ, ତାପରେ we will start class sharp at 9:50. Okay, we will start class sharp at 9:50. Okay, तो आमे एबे डिस्कस करिवा कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस हेगला. तो a lot of diseases that are commonly bacterial हला. तो इधर आमे डिस्कस करिवा. तो एठी मु तुमको गोटे ओवरव्यू देखैछि गोटे डायग्राम रे. तो को जगह कोठी कोठी इन्फेक्शन होछि, को कीटाणु से माने इन्फेक्शन करूछि हला. तो जदि तुम देखिबो एठी माने ब्रेन, ओके. तो ये ब्रेन देखुच, तो ब्रेन रे को माने इन्फेक्शन करचंती हला. तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तापरे कान को ओटाइटिस मीडिया, निमोनिया, तापरे हला. तापरे एडी स्किन इन्फेक्शंस अछि, तापरे आउची सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस अछि, यूटीआई अछि, फूड पॉइजनिंग अछि, गैस्ट्राइटिस अछि, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अछि, एंड साइनसाइटिस अछि, एंड आई इन्फेक्शंस अछि. ठीक अछि. तो these are different target zones of bacteria. तो सेठी को ऑर्गेनिजम्स अटैक करछि तुमको देखाय हैला. तो मेनिंजाइटिस माने कोन? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन. तब ओटाइटिस माने कोन? इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर ईयर माने मिडिल ईयर. एटा मिड ईयर जाईछि, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर. तापर हम डिस्कस करिवा न्यूमोनिया. तो न्यूमोनिया हमर कोन? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लंग रा इन्फेक्शन हेले न्यूमोनिया होउछ. क्लियर. तापरे तम देखिबो एठी स्किन इन्फेक्शन. तो स्किन इन्फेक्शन हे गेला एसटीडी माने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तापरे फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्राइटिस, एके एसो डिजीजेस दिहाइछ. तो एइथरे हमर टारगेट जोन दिया गेला. तो टारगेट जोन को माने को ऑर्गेनिजम्स अटैक करछ. ओके. So now we will go to some common viral diseases. हेगला. तो सब कॉमन वायरल डिजीजेस रे सबुडु फर्स्ट हमें जोड़ा कि सबुडु कॉमन बेसिकली जानू छे, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा, या ताको कॉमन लैंग्वेज रे कोन कुआ जाय? फ्लू. ठीक अछि. सो दिस इज ए हाईली इन्फेक्शियस. एथरे कोन हमकु बेसिकली सिम्पटम्स एंड पैथोजेन को देखियार अछि, एंड जदि ट्रीटमेंट रो किसी प्लान अछि या किसी वैक्सीनेशन रो कांसेप्ट अछि, सोडा भी हमें डिस्कस करि पारि हला. तो इन्फ्लुएंजा रे कॉज देखुछ हमें, दैट इज कॉल्ड फ्लू. So it causes fever and pain all over the body and affects the nose, throat, and air passage, as in case of common cold. ठीक अछि. एक्चुअली कोन बेसिकली सब जाक सिम्पटम एका भलिया, किंतु पैथोजेन के अछि ता अनुसार रे हमें डिजीजेस गुडा को ना देबा. कॉमन कोल्ड रे भी सेम सिम्पटम आसीबो, बट दैट इज कॉल्ड बाय राइनोवायरस. ठीक अछि. तो जदि वायरल डिजीज अछि ताको हमें कॉमन कोल्ड कहबा, बट एठी कोन होची तमर बैक्टीरियल डिजीज. ओके. सो दिस इज अ सीरियस इन्फेक्शन हला. तो इथरे इन्फ्लुएंजा हमर के करूची. तो एठी स्पेशली हमें वायरस डिस्कस करूछे.
तो वायरल डिजीजेस रे हमर इन्फ्लुएंजा ओके तो वेरियस टाइप्स अछि कॉज्ड बाय मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा ठीक अछि तो हमको इंपोर्टेंट कौन मन रखियार अछि सेटा खाली अंडरलाइन कर दवा सो मिक्सोवायरस ताको कॉमनली फ्लू कुआ जाए and affects the nose, throat and air passage. ठीक अछि तो this is the cases जदि neglect करा जीवो it can result in higher infections. ठीक अछि तापर आसीगला हमर स्मॉल पॉक्स तो स्मॉल पॉक्स को आमे वेरियोला भी कहू so it was a dangerous disease of the past by God's grace and a lot of hard work of a lot of scientists we have eradicated smallpox okay so otherwise it was very painful okay so infectious disease starting with high fever chill backache and headache okay now the rash that there's a rash so the rash appears first on the face ठीक अछि जो दाग गुड़ा सब आग face the rash appears first on the face then on the rest body it is more on the face and limbs and less on the trunk माने हमर जो exposed part हमर जो exposed part अछि हमर कटी ओके एक्सपोज पार्ट जोड़ा अछि सेठी बेसी होउची माने पिठी हाथ रे टिके कम होउची पिठी देह रे टिके कम होउची हला the rash starts as small reddish spots हला small reddish spot हिसाब रे आरंभ हबो which changes into papules these in turn change into small vesicles containing clear fluid तबर vesicle हे जिवो pustules finally a scab is formed and it falls off by the third layer okay एही गोटे दागड़ रहि जिवो ठीक है कि नहीं this disease is caused by smallpox virus तो कीटाणु किए वेरियोला वायरस ठीक है जी पैथोजन किए वेरियोला वायरस it is present in oral and nasal discharges of the patients ठीक अछि तो जदि नाकरू पाटिरू किछि बाजिला तो सेथरे अदर पीपल में भी इन्फेक्शंस which is ejected during coughing and sneezing तो से पे जो ड्रॉपलेट्स तैयारी हबो से ड्रॉपलेट जदि पड़िला it can cause disease so this was discovered by Edward Jenner in 1798 so if you remember the story of vaccination से एडवर्ड जेनर कौन करथिले से एक्चुअली स्मॉल पॉक्स वायरस डिस्कवर करिया पे रेस्पोंसिबल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन तो से देखिले कि कौन व्हाट डिड जेनर सी जेनर सॉ दैट समस्त को स्मॉल पॉक्स हुए से धनी थाउ गरीब थाउ पतला थाउ मोटा थाउ पुओ थाउ झियो थाउ रजा थाउ भिखारी थाउ समस्त को स्मॉल पॉक्स होछि किंतु जो माने गाई संगे एसोसिएटेड तांकु स्मॉल पॉक्स माने जे गाई दुहती गाईर केयर नियंती तांकु केबे स्मॉल पॉक्स हो तो सेई पे से भाबिले किछि ना किछि माने ते गाई संगे माने होउची जोटा कि तमको स्मॉल पॉक्स बंचे तो व्हेन ही वेंट एंड स्टडीड से देखिले कि गाई को गोटे डिजीज हुए काउ पॉक्स बुझिगला तो जो लोक मान तांग संगे लागि थाती ताकु भी काउ पॉक्स हे जाए गोटे माइल्ड डिजीज किंतु पर से जो काउ पॉक्स जाको हेची तांकु आ स्मॉल पॉक्स हुए हैला जे थरे काउ पॉक्स ग्रसित हेची ताकु आ स्मॉल पॉक्स हो तो दिस वाज आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ जेनर तापे से कौन कले तांगर गोटे चाकर टका थाए जेम्स फिप्स
ताकू से कौन कले से काउपॉक्स कीटाणु आनिकी देले जेबे ताकू काउपॉक्स कीटाणु आनिकी देले तो जेम्स फिप्स को भी काउपॉक्स हो गला किंतु जेबे काउपॉक्स हो गला किसी दिन पर से भी ठीक हो गला किंतु ठीक हैला पर जेनर कौन कले ताकू स्मॉल पॉक्स कीटाणु दे देले हैला तो ही कुड हैव डाइड किंतु as according to Jenner's calculation he also did not suffer from smallpox तो ସେଇଥିରୁ ସିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଲେ କଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫର୍ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଗାଈ ରୁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ତ ଗାଈକୁ ଭ୍ୟାକା କୁହାଯାଏ ଓକେ ତ ଭ୍ୟାକାରୁ ନାଁ ହେଇଗଲା କଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଠିକ है तो ଗାଈର ନାଁରୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଶବ୍ଦ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ଭ୍ୟାକା ମାନେ ହଉଛି ଫ୍ରମ୍ କାଉ ଓକେ So this is a story of smallpox and bhava कि गोटे simple calculation माने एडवर्ड जेनर को ता पई किछि अवार्ड वार्ड दिया गलानी because he did not use the protocols scientific protocols अछि माने से जो जेम्स फिप्स को देले कीटाणु सेटा से देबा उचित नथिला काहे कि ना he could have died okay तो आग ह्यूमन ट्रायल्स पूर्वरु बहुत अलग अलग काम करिया पड़िबो तो सी डायरेक्टली दे देथिले so that is why people did not appreciate him but it saved a lot of lives in those days बुझियला काइना सेबे कोन माने जेमिति हमर कोविड 2020 रे हितला 1920 रे कोन हितला एई स्पैनिश फ्लू सब उडुथले तापर से भलिया स्मॉल पॉक्स 1820 से थिला तो से जो সময়টা खतरनाक थिला तो से समय रे जदी से एवडा ट्रिक यूज न कर थाते ताले मे बी a lot of other people would have died हैला किंतु स्टिल जेहेतु the approach was not scientific he was not given due regards for it हैला किंतु तांकर शब्दटा एबे भी वैक्सीन हमें यूज करूछु तापर नेक्स्ट ओके concept is chicken pox तो chicken pox को हमें varicella कहू एंड chicken small pox को हमें variola कहू ठीक है तो chicken pox is caused by varicella zoster ओके तो varicella zoster जो कीटाणु एंड एटा टिके माइल्ड फॉर्म आउ एथरे भी दाग हुए इधर भी समिति हुए बट दिस इज बिट माइल्ड एंड एथरे देखा जाउची कि थरे जदि कहा को हेई जाईची ताले आउ थरे सेटा हुए तो से गोटे नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करी जाए हैला it has been seen that it once a person who has suffered from chicken pox he does not suffer from chicken pox again हैला तापरे नेक्स्ट हम डिस्कस करिवा तो नेक्स्ट इज measles ओके measles आउ गोटे सिमिलर डिजीज ताकू ओके हमर कौन विलेज लैंग्वेजेस मान करे ताकू कौन कह जाए कहलो ओके महापुरु बेली कह जाए हैला so measles is a highly infectious disease causing fever inflammation of air passages and rashes all over the body it attacks especially children below 5 years and those who have escaped may be attacked in later life जदि काकू थरे हेनी लोअर लाइफ है ताले हायर माने एल्डर लाइफ रे हेई पारे ओके एंड आप वी हैव वैक्सीन तो measles पे हमर वैक्सीन अछि एंड रूबियोला माने जर्मन measles हैला तो there is a vaccine called MMR तो MMR वैक्सीन टा गोटे ट्रिपल एंटीजन mumps measles
एंड रूबियोला ए तीनटा को से ठीक तीनटा पे दिया हुआ ओके मम्स मिजल्स एंड रूबियोला ହେଲା mumps measles and rubiola ସେ ତିନିଟା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଦିଆ ହୁଏ ତ ଦିସ୍ କଲ୍ଡ ଟ୍ରିପଲ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓକେ ଏଟା अर्ली स्टेजेस ରେ ଦେଇଦେଲେ କଣ ହବ ଆଉ ପରେ ଏ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ତଳେ ଗୋଟେ ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ତଳେ ତମେ ଦେଖୁଛ ପିଲାର ଗାଲଟା ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ମମ୍ପସ୍ ତ ମମ୍ପସ୍ କୁ ଆମର ଓଡିଆରେ କଣ କୁହେ ଗାଲୁଆ ଗାଲଟା ଫୁଲି ଯାଏ ତ ସେମିତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାଲୁଆ so that is because actually ଆମର जो parotid glands ଅଛି salivary glands तो parotid salivary glands गुड़ा inflame हो जाती by the virus that is called paramyxovirus या mumps virus तो mumps virus infection रे तार गाल मान parotid gland गुड़ा swelling हो जाए so that is why it is called parotitis या mumps किंतु जदि एल्डरली स्टेज रे हुए मम्स इट इज मोर पिला बेला को एते डेंजरस नुह बट जदि एल्डरली स्टेज रे हेची इट इज आल्सो एसोसिएटेड विथ ऑर्काइटिस माने कोन इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस ठीक अछि तो से पे जदि एल्डरली स्टेज रे रोगोटा हेची ताले टेस्टिस भी इन्फ्लेम हेई पारे and that person may also not be able to become a father ठीक अछि तो से पे एटा बहुत डेंजरस प्लीज रिमेंबर हैला तो से पे मम्स टा अर्ली स्टेजेस रे बेसी डेंजरस न हो किंतु जदि लेटर स्टेजेस से हायर एज रे हेची तो इट इज मोर इन्फेक्शियस एंड इट इज मोर प्रॉब्लमेटिक हैला तापरे नेक्स्ट होची सबुठु खतरनाक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेस that ever known in history that is called poliomyelitis तो पोलियो एक्चुअली मो सबुठु काहे ताको बेसी गुरुत्व दिए काहे ना पोलियो टा देखो को रोग रे गोटे लोक मरी गला इट इज ऑफ नो प्रॉब्लम ठीक है जी सेटा लोक किछ दिन मन पाइबो भूली किंतु पोलियो गोटे डिजीज जदि हेला ते जीवन सारा अफेक्ट कर it will affect the person for whole life so that is a big problem हला कि नहीं प्लस ताकू जीवन सारा से क्रिपल्ड कर दबा पराश्रित कर दबा ठीक अछि सो दैट इज व्हाई ताकू हम कोन कहउछु इन्फेंटाइल पैरालिसिस तो पोलियो इज आल्सो नोन एज इन्फेंटाइल पैरालिसिस माने इन्फेंट्स माने छोटो स्टेज नु से पैरालाइज हो जाते ओके now it occurs at when under 5 age re hebar chances tike besi hela the disease spreads mainly through intestinal discharges hela it is also spread through contaminated food and drinks or by flies and it is basically a foodborne disease food and drink okay borne disease polio virus is enters via alimentary canal where it multiplies and reaches the nervous system through bloodstream hela incubation period is 7 to 14 days incubation period ta kona it is that period mane infection ru appearance of symptom hela to incubation period ame kaha ku कहउछु incubation period mane इन्फेक्शन हेबारु सिम्पटम्स आसीबा भीतर समयटा को इंक्यूबेशन पीरियड कुआ जाए सो एटा 7 रु 14 दिन 7 to 14 days भितरे से तारा symptom show करिवो okay it produces the inflammation of the nervous system early sign is involvement of CNS causing inability to bend the head forward हैला body stiff हे जीवो neck especially important sign body टा stiff हे जीवो paralysis starts following the weakness of skeletal muscles हैला से गोड़ रही पारे से हाथ रही पारे skeletal muscles गुड़ा weak हे जिवे the attack of paralysis begins with high fever headache chillness it if muscles of larynx and pharynx are involved
it proves fatal. ठीक है, within 2 or 3 days the paralysis reaches its maximum. Okay, there is no cure for polio. Polio पे हमारा cure नहीं, but we can prevent it. तो सेही पे हमारा जो पल्स पोलियो प्रोग्राम अच्छी, तो सेही तरह कौन होची 2 गुण जिंदगी के, तो सेही तरह अप टू 5 year चाइल्ड को पोलियो वैक्सीन देवा पे सजेस्ट करा होची. ओके, दैट इज ए ओरल पोलियो वैक्सीन. तो पोलियो रो दीटा वैक्सीन अच्छी. आग दिया जाउथला इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आईपीवी हैला, किंतु आजिकली बेसिकली ओरल टा दिया जाउची, दैट इज कॉल्ड ओरल पोलियो वैक्सीन हैला. ओरल पोलियो वैक्सीन कोन ड्रॉप्स सब खाई देबा पड़े. फाइन, दिस वैक्सीन इज सेफ एंड वेरी इफेक्टिव. तो 5 वर्ष पर्यंत तमे खाई परिबो. एंड तमे जदि ऐड देखुतबो से कहउछन्ती सबु संडे आसी खाओ, because it is very very dangerous. Government does not want people to suffer from polio. हैला, से पे गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस. तमे देखिबो आजकल गां गळी माने जोटी टिके लोक माने नॉन सीरियस थांती, सेठी भी वॉलंटियर्स जाई कि घरे घरे वैक्सीन दे के आसु हैला. तो जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन दैट वाज डिस्कवर्ड बाय साल, ओके, जोनास साल. तो जोनास साल से डिस्कवर करतले कौन इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, किंतु ओरल पोलियो वैक्सीन दिस वाज डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट सैबिन. ठीक अछि, तो एल्बर्ट सैबिन ताको डिस्कवर कर हैला. So please remember that if there is any person, any small child living around your house, please always encourage. देखो केबे केबे कोन it is a responsibility of everybody. तो एबे गवर्नमेंट एकुडा किछ कर परिबनी जे पद लोक निजे लागिबेनी, निजे सीरियस हेबे. So इसलिए when if you know some child around your household, तो ताकू सबले गाइड करिवो कि पोलियो वैक्सीन नै कि आस. टेक ओरल पोलियो वैक्सीन डेली ला, जो जो सुविधा हो. नेक्स्ट डिजीज इज कॉल्ड ट्रैकोमा. तो ट्रैकोमा रे तमरा कॉज्ड बाय क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस. इट इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द आई अफेक्टिंग कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया. ठीक है, तो कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया अफेक्ट हो जाउची. Okay, it is characterized by development of granules. Its common symptom are inflammation, pain, and watering of eyes. ठीक है, inflammation, pain, and watering of eyes. It can result in blindness. It can result in blindness also. ठीक है, तो केमिति स्प्रेड हुए by direct contact. Like handkerchief, towel, pillow. Suppose पेशेंट सांगरे तमे तार किछि भी माने जिंस यूज करिवो, ताहाले you will get the disease also. So suppose somebody is having trachoma, तार को भी जिंस यूज करिवोनी, ता संगे डायरेक्ट कांटेक्ट आसी हे गेला. अपन नेक्स्ट होची डेंगी. तो डेंगी एक्चुअली बहुत लोग आपको डेंगू कहती, आपको डेंगू कह जाएनी डेंगी. तार प्रोनाउंसिएशन होची डेंगी, DENGUE, डेंगी फीवर. ओके, एंड दिस इज कॉज्ड बाय आरएनए वायरस. एटा बहुत इंपोर्टेंट. तो एक्चुअली तमे देखिबो जेति कि भी आरएनए वायरल डिजीज अछि, तार क्योर एपर्यंत संभव हैनी. वेरी डेंजरस डिजीज. तो आरएनए कंटेनिंग आर्बो वायरस ताकू को कहती डेंगी वायरस को, और फ्लैवी वायरस. ठीक अछि, the virus which causes dengue is mosquito borne. Okay, the mosquito borne माने कोन, the dengue is transmitted by mosquito. को mosquito, tiger mosquito. ताकू एडिस एजिप्टी है गला. तो डेंगी डिजीज, और उसको DHF बोलते हैं,
शॉर्टकट में डेंगी हिमोरेजिक फीवर। ठीक अच्छे। सो ये जो डेंगी तो यहाँ हेगले कौन हम तुम प्लेटलेट काउंट सडनली क्रैश कर। Okay, they directly affect the platelets. So platelet counts will suddenly fall. And तमे जानिଛ platelets न हेले कौन हबो internal hemorrhage हे जिवो से पे ताकू immediately help दरकार। Okay, so that person has to be given immediate help and ताकू platelet administer करियान पड़ी। ठीक अछि। incubation period is 3 to 8 days। ओके गोटे हूँ क्लासिकल डेंगू एंड गोटे हूँ डीएचएफ डेंगू डेंगी हिमोरेजिक फीवर मान से रक्त स्राव हम बिकॉज व्हेन द ब्लड वेसल्स कैनॉट प्रोटेक्ट तो द ब्लड विल बी एक्सपोज्ड एंड दे विल बी व्हाट तो दे विल बी लॉस्ट विथ द इंजरी जो प्लेटलेट्स नथिले कौन हम ब्लड क्लॉटिंग हेनी एंड सो symptoms कौन अच्छी हाई फीवर हेडेक पेन बिहाइंड आईज है तापरे muscles and joint pain loss of sense of taste and appetite measles like rash in upper chest and upper limbs nausea and vomiting सब symptoms अच्छी तापर लेखा डीएचएफ एटा होची क्लासिकल डेंगी रो डीएचएफ रे कोन हबो ता सांगर सांगर ब्लड लॉस भी ठीक अछि दैट इज कॉल्ड डेंगी हेमोरेजिक फीवर। ठीक है तापरे हमर डेंगी केस रे एस्पिरिन खाया पे मना करा जाए। ओके एंड यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। ओके तो प्लेटलेट एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटलेट काउंट बढ़िबा घटिबो देन यू आर सेट। So this is a very when it can kill. ओके तापर होची रेबीज या हाइड्रोफोबिया। तो तुम तो जानिछ रेबीज रा स्प्रेड केमती हुए तो दिस इज आल्सो बाय रेबीज वायरस एंड दिस वायरस इज in when a person gets infected by dog bite या तमर जो अदर डॉग वैराइटीज जैकल वुल्फ कैट एमान का कामड़ा रे स्प्रेड हुए। ओके एंड एथरे कोन हुए द पर्सन बिकम्स वेरी अफ्रेड ऑफ वाटर। ओके से पे तक हाइड्रोफोबिया भी हुआ। saliva also the saliva from stomach severe headache high fever। okay alternating state of excitement and depression inability to swallow even fluids due to choked throat। okay the virus destroys the brain and spinal cord so rabies is 100% fatal। there could be compulsory immunization of dogs and cats। तो से पे जो माने घर डॉग्स रखुछंती से माने तांको इम्यूनाइज कर दउछंती। स्ट्रीट डॉग्स भी इम्यूनाइज करिया कथा सरकार या एजेंसीज हु आर डूइंग एनजीओ एक्टिविटीज। तो स्ट्रीट डॉग तम इलाका रे अछि तांको कोन करो तांको माने रेबीज पे इम्यूनाइज करो हला। all those people who are handling dogs at home they should also get immunized। ठीक अछि तापरे गोटे डिजीज अछि चिकन गुनिया या चिकुन गुनिया प्लीज रिमेंबर इट इज नथिंग टू डू विथ चिकन। सब चिकुन गुनिया टा चिकन संगे किछि भी रिलेटेड नाही तो से पे डोंट गेट एक्साइटेड। तो इट इज आल्सो ए वायरल डिजीज हला चिकुन गुनिया टा भी गोटे वायरल डिजीज। The virus was first isolated from human patients and Aedes aegypti mosquito from Tanzania in 1952। तो टांजानिया रो एई रोग प्रथम थर देखा जाइतिला मनुष्य रे। so that is why it is given a name from that language
चिकुनगुनिया ओके ता माने ओके so the name chikungunya is derived from the native word of the disease which is in which the patient lies doubled up due to several joint pains okay like the so now we will go to some bacterial diseases तो बैक्टेरियल डिजीजेस रे हमर आसीजिवो नाना प्रकार डिजीज तो प्रथम टा होची कॉलेरा तो इट्स वेरी वेरी कॉमन स्पेशली हमर रथ यात्रा हबो या यदि मास गैदरिंग होची कोठी ओके जोठी गोटे छोटिया पानी रिजर्व अछि तो समस्त सेठी गाधे बाधे एटसेट्रा करिए so that is why main is okay so the infected water is the source for cholera ठीक अछि so this is acute infection caused by vibrio cholerae okay pathogen ना कौन है गेला vibrio cholerae okay it's called vibrio cholerae now they may get into healthy person with contaminated food and drinks taken by mouth patient starts passing stool frequently माने पूरा झाड़ा पिटी जीव which are white like rice water and gets repeated vomiting okay झाड़ा वांती लगी रही now तापर हमें कौन डिस्कस करिवा ताको ठीक केमती किरा जीव तो बेसिकली देयर इज नो मेडिसिन फॉर कॉलेरा तो तार मेन जिंस कौन आमर फ्लूइड लॉस होची से पे रैपिड फ्लूइड इनटेक करिया पड़िबो गुड फ्लूइड not infected fluid so a large quantity of fluid and salts are rapidly lost therefore most important treatment is to orally rehydrate okay suppose बहुत सीरियस हो जाइची तो saline चढ़ा पड़ता है तो आमर जो रथयात्रा हबो तमे देखिबो सेठी कंपलसरी तमर दिया हुए कॉलेरा वैक्सीनेशन कहीं से जोड़ी से रही थांती तो सेठी कौन हुए माने ओनली वाटर इज देयर ओके तो आमर जो कॉलेरा पेशेंट्स जोड़ी इन्फेक्टेड वाटर हो से पाखापाखि हेबार चांसेस बेसी रही या खिया पिया बेसी तो जब रथयात्रा हेले कौन हम असंख्य लोक आसवे तो सेठी माने झाड़ा परिस्रा भी बेसी हम एंड पानी रो सोर्सेस कंटामिनेट हम एंड सो दैट इज व्हाई इट इज कॉजिंग इन्फेक्शन हैला तो से पे जो माने रथयात्रा जाती तांको कंपलसरी कोरोना इंजेक्शन दिया जाए स्टेशन रो ही दिया जाउतला एबे मु जानिनी व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर्स ता जो नेक्स्ट डिजीज हमें डिस्कस करबा दैट इज टाइफॉइड तो टाइफॉइड जो डिजीज ता तमे ऑलरेडी बढ़िया ଗୋଟେ स्टोरी देछि हमर एनसीईआरटी बही रे दैट इज हाउ मैरी मैलन माने जे की टाइफॉइड इन्फेक्टेड थिले ते किमिति केते नाना प्रकार लोगों को टाइफॉइड देइचंती बिकॉज शी वाज ए कुक इन देयर प्लेस हैला तो इट इज कॉज्ड बाय ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी ओके तो साल्मोनेला टाइफी किमिति जाए फूड एंड ड्रिंक कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक रो इन्फेक्शन हबो this spread is facilitated poor environmental hygiene माने जेंती जगह रे जोटी गंधिया बेसी थिबो तो सेठी एरा स्प्रेड हेबार बेसी चांस okay a large number of organisms have to be ingested by a healthy person to suffer from typhoid so smaller number may produce the disease okay if the organism is very virulent माने तमरा हमर कौन होची सपोज टाइफॉइड अछि तो इट विल कॉज डिजीज जो ऑर्गन को जीवो से ऑर्गन रे डिजीज हेबार चांसेस होची ओके तो से टाइफॉइड पे भी हमर वैक्सीन अछि सो वी हैव वैक्सीन so we can take okay
Now, salmonella that causes enterocolitis after ingestion. माने तुम डाइजेस्टिव सिस्टम रे कोन आ कोलन रे इन्फ्लेमेशन हे जिवो. They do not penetrate beyond lamina propria and multiply in lymphoid tissues. जो हमर pairs patches अछि intestine रे सेठी जाई कि से मल्टीप्लाई करी. हला symptoms may subside within a week or two. Okay, this is clinical syndrome characterized by fever, headache, cough, splenomegaly and leukopenia. Leukopenia माने कोन WBC count पड़ी जीवो. ताकू एंटेरिक फीवर भी कुहा जाए. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम रो असुविधा होची से पे इट इज आल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर. ठीक अछि. ताकू डायग्नोसिस करया पे को टेस्ट यूज करा हुए वाइडल टेस्ट. एटा मन रखिबो, एटा नीट पे इंपोर्टेंट वाइडल टेस्ट. हाउ टू डिटेक्ट ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, यू कैन गो फॉर वाइडल टेस्ट. ठीक अछि. तापरे तमे तापे ट्रीटमेंट नहीं पारिबो. तो हमर वैक्सीन अछि प्रिवेंशन पे टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड ए एंड बी. तो से वैक्सीन ता नहीं होबो. ओके. तापरे ना तो नेक्स्ट डिजीज इज डिप्थेरिया. तो डिप्थेरिया को के कॉज करूची. तो डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिये. तो एई सब थरे देखो नीट रे कोन क्वेश्चन आसीबो ये पैथोजेन कोन हैला माने किए डिजीज टा कॉज करछ. इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. तो सब डिजीज रा पैथोजेन टा मन रखिबा कंपल्सरी. ठीक है. Now, generally up to 5 years सेटा एफेक्ट करे. सेही पे we have vaccine for it also. हमारा छोटो पिला दिने डीपीटी वैक्सीन दिया हुए. तो डीपी थी कौन पे डिप्थेरिया प्लस परटूसिस प्लस टीटा. ओके, डिप्थेरिया परटूसिस एंड टीटानस. तो परटूसिस को अदरवाइज कौन कुआ जाए. परटूसिस को अदरवाइज कुआ जाए कौन हुपिंग कॉफ. परटूसिस ताको हुपिंग कॉफ भी कुआ जाए. हेला हुपिंग कॉफ एंड लास्ट इज टीटानस. ओके. तो से पे एडा गोटे ट्रिपल एंटीजन अछि माने गोटे माडरे तीन तीन टा डिजीज को प्रोटेक्ट करि परिबो. ओके, से छोटो पिला बयस रु ही दिया हे जाए. काहे कि ना जनरली डेंजर डिजीजेस हुआ पर असुविधा हेले अदर से पे आगु लगे देरे गल. देख देला. Now, say this is pertussis. So pertussis is called whooping cough. छोटो पिलांकरे caused by Bordetella pertussis. हैला तो caused by Bordetella pertussis. Now, एइथरे कौन हुए छोटो पिलाटे जब खासे एमिति सुबिबो. तो से पे whooping sound सुबा जाए. से पे ताको हमें whooping cough. Clear? Now, एइथरे भी तमे प्रोटेक्शन करि परिबो by DPT vaccine. Tetanus is a dangerous disease. ताकू लॉक जॉ कुहा जाए. काहे के लॉक जॉ बिकॉज़ टीटेनस रे मसल टा टिटानी हे जाए. टिटानी माने कोन परमानेंट कंट्रैक्शन से रिलैक्स करिवो. तो सेही पे टीटेनस रे हमर जो सबुटु बॉडी रे स्ट्रांगेस्ट मसल कोटा जॉ मसल. तो सेही पे सेटा लॉक जॉ कुहा जाए. हमर जॉ टा लॉक हे जिवो आउ यूज करि परिबो नै. ठीक अछि. इट इज वेरी वेरी डेंजरस डिजीज. तो सेही पे कौन हुए वैक्सीन टा छोटो पेलाई दिया ही जाए. तो डीपीटी दे परिबो डिप्थेरिया परटूसिस टीटानस नले डीटीबी दे परिबो डिप्थेरिया टीटानस. तो जेहेतु एटा बहुत डेंजरस डिजीज तो इफ यू आर माने हैविंग इंजरी इन द एक्सपोज्ड एरिया
तो एक्सपोज एरिया जदि इंजुरी अच्छी ताहले कौन करिवो सेठी जाई ओके तो व्हाट यू कैन डू यू कैन ऑलवेज टेक वैक्सीन ओके तो वैक्सीनेशन दी प्रकार थाए और छोट बेला रे दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनाइजेशन एटा हमें पर पढ़िबा इम्यूनाइजेशन माने कोन कि तमर बॉडी को हमें इंस्टिगेट करूछु फाइट करिया पे एंड मेमोरी सेल्स करिया पे तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन रे हमें कोन करछु वी आर मेकिंग द बॉडी फिट ओके वी आर मेकिंग द बॉडी फिट तो सेई पे माने हमें बॉडी रो इम्यून सिस्टम को लढिया पे सिखौ किंतु जेहेतु एटा डेंजरस डिजीज एंड सपोज गोटे पर्सन रो पादरे कटिगला या हाथ रे कटिगला तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई तो सही केस रे तमे गोटे पैसिव इम्यूनाइजेशन भी नहीं जाई परिबो बहुत बतिला विषय हां जान